Assalamu alaikum students. Let us start the next topic of chapter number 16, the topic known as modulation. Students, let us cover the real concepts of the technique known as modulation. Students, why a message signal is modulated? Why not it is sent as a just message? हम इसको एज अ मैसेज क्यों नहीं सेंड करते? वाई डू इट इज़ नेसेसरी टू डू अ मॉड्यूलेशन एंड सुपर इम्पोज अ कैरियर सिग्नल ऑन टू अ मैसेज सिग्नल एंड सेंड इनटू द एयर? ये कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है. नाउ जब भी हम देखते हैं कि मैसेज सिग्नल को कैरियर से मॉड्यूलेट किया जाता है तो क्वेश्चंस कम इन आवर माइंड दैट व्हाई डू वी मॉड्यूलेट अ सिग्नल. ठीक, नाउ लेट अस कवर दिस टॉपिक. अब जैसे कि ये मैसेज सिग्नल है, दिस इज अ मैसेज सिग्नल, दिस हैज वेरी लो फ्रीक्वेंसी. व्हेन दिस मैसेज सिग्नल इज सेंट over the medium that cannot travel further distance. To make it more convenient for a communication system to send over at a certain distance, we need to modulate that signal. अब इस मैसेज सिग्नल को बहुत दूर फेंकना है तो इसको हमें मॉड्यूलेट करना पड़ेगा. फॉर मॉड्यूलेशन उसके ऊपर हमने एक कैरियर सिग्नल को सुपर इम्पोज करना पड़ेगा. उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा. ठीक, तो ये जो अपना सिग्नल है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. नाउ लेट मी टेल यू इन अ सिंपल एक्सपेरिमेंट कि वो कैसे. अब देखें, दिस इज़ अ पेपर. अब लेट मी थ्रो दिस पेपर. अब जैसे ये पेपर मैं थ्रो करूँगा तो इट विल नॉट ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस. अब इस पेपर को फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल करवाने के लिए, टू मेक इट more convenient for a communication system to send it over a long distance, so हमें इसको एक कैरियर वेव से के ऊपर से पर इम्पोज करना पड़ेगा. अब इसके अंदर मैंने मार्कर डाला है तो ये अभी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकेगा. जब हम इसको फेंकेंगे तो ये कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और जब ये वहाँ पर निकलेगा तो इसके अंदर से हमने इस मार्कर को निकाल देना है. दिस इज़ नोन एज द मॉड्यूलेशन. अब इस मॉड्यूलेशन में हमने किया क्या, हमने वो डेफिनेशन नहीं रटी, बस हमने ये देखा कि कोई भी मैसेज सिग्नल हो, उस मैसेज सिग्नल को जब कैरियर वेव से सुपर इम्पोज किया जाता है, इस कैरियर सिग्नल को इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया जाता है तो ये कुछ इस तरीके का सिग्नल बन जाता है. दिस सिग्नल इज नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल. अब ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ़ायदा क्या हुआ कि ये नाउ इट इज़ कैपेबल टू कवर द लार्जर डिस्टेंस. नाउ it can travel further. अब ये बहुत ज़्यादा फर्दर ट्रेवल करेगा क्योंकि जस्ट मैसेज सिग्नल होता तो वो फर्दर ट्रेवल नहीं कर पाता. अब जैसे वो रिसीवर के पास पहुंचेगा, अब ये तो था दिस इज मॉड्यूलेशन परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द ट्रांसमीटर के एंड पर मॉड्यूलेशन की जाती है. पर जब हम रिसीवर के एंड पर यही डी मॉड्यूलेशन करेंगे तो wait a second. Now this is the technique of demodulation. We have received a message. In a message we know that there is a carrier. We know that there is a carrier signal and there is original message. So this carrier signal contains original message and a carrier signal. Now in demodulation what we have to do, we have to multiply the same carrier with that signal. When the same carrier wave is multiplied with the same signal, so that carrier will be this carrier will be diminished from that original signal and we will receive that real signal. जो कि हमारा रियल मैसेज था वो हम फेच कर चुके होंगे when we have demodulated it. तो डीमॉड्यूलेशन में हमने क्या सीखा कि वही कैरियर सिग्नल हमें मिला, उसी कैरियर सिग्नल से हमने वी हैव रिसीव्ड मैसेज, और रिसीव्ड मैसेज में हमें कैरियर सिग्नल और रियल मैसेज था. जब हमने उसी सिग्नल को, रिसीव सिग्नल को कैरियर से मल्टीप्लाई किया विद द सेम 180 फेज शिफ्ट, तो क्या हो गया कि वो कैरियर में कैंसिल हो गया और वी हैव गॉट द रियल मैसेज. अब 180 फेज शिफ्ट का क्या होता है कि फॉर सपोज दीज आर द टू सेम आइडेंटिकल सिग्नल्स. अब ये क्या हैं, दीज आर द टू सेम फॉर से आइडेंटिकल सिग्नल्स, बट हेयर दिस is of 180 phase shift.
अब ये सिग्नल में क्या है, 180 फेज शिफ्ट है। तो जब ये दोनों सिग्नल आपस में मिलेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, सो दे कैंसिल ईच अदर, ये दोनों सिग्नल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दिस इज व्हाट द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन जैमर्स, के the same carrier signal is multiplied but with the 180 phase shift. This same signal and here it is the same signal. These both are the same signal, but this is the copied version of it but with a 180 phase shift. So when a same signal 180 phase shift is multiplied with the same signal, so they both multiply or cancel each other. Okay, so now that is how the real message is fetched with the demodulation technique. Now let us cover the types of modulation. Number one is AM. AM stands for amplitude modulation. Now in amplitude modulation, the carrier of the amplitude is raised in order to get the amplitude modulation done. So now what we have to do in amplitude modulation is the carrier wave amplitude is varied according to the message. अब in AM is in kilohertz, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किलोहर्ट्ज में होती है। सो हम इसमें करवाते क्या हैं कि वी ओनली मॉड्यूलेट द एम्पलीट्यूड। जैसे फॉर से दिस इज अ रियल मैसेज, ओके, एंड इन इट हियर इज द कैरियर. So what we just have raised the amplitude of that original message. So our original message will be like this one. So this is how the amplitude of the carrier wave is varied. Okay, now here is the amplitude modulated signal. This signal is known as amplitude modulated because we have varied the amplitude of the carrier wave. हमने इस carrier wave का क्या किया, इसका amplitude vary किया. So that modulation technique is known as amplitude modulation. Now the second technique is known as frequency modulation. In the frequency modulation, now the second technique is known as FM. All of you have heard the term FM. FM is known as frequency modulation. Now its frequency is in megahertz and it starts from 88 megahertz to 108 megahertz. जो हम FM भी सुनते हैं वो वही same FM. ठीक? Now in it, here's for say this is a real message. In a real message we have to raise its amplitude. So in it, this is the original message and this is the carrier. Now we want to modulate the frequency, so we have to vary the original signal's message frequency. So in it, this is how it looks. Rarefactions and compressions, it will look alike that. Somehow in some cases we see rarefactions, in some cases we see compressions. Now its frequency starts from 88 megahertz to 108 megahertz. Now there is some advantages of FM over AM. FM cannot travel further distance, but its message is clear. We must have heard AM radio, we must have heard FM radio, but the voice clearance of that FM radio is more because we do FM, frequency modulation, and its frequency is higher too. So the advantage of FM over AM is that we receive the clear voice, but the disadvantage of FM over AM is that it cannot travel further distance
as it is traveled by the am distance. Thank you.